कर ली सब? अच्छा जी. So we're doing the AHA BHA peel today, and just a little tutorial on how to do it at home yourself. So I'm in the clinic at the moment, that's why I'm looking at the keys, but you can do it on yourself. आप मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा, सबसे अच्छी चीज़ ये है. And then first cleanse your skin with a cleansing cream, ताकि कोई डेड स्किन वगैरह है, अगर स्किन ओवर ड्राई हो रही है तो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए. वरना AHA BHA peeling solution which comprises of alpha hydroxy acids and beta hydroxy acids. Alpha hydroxy acids are water soluble, and beta hydroxy acids are lipid soluble. By lipid soluble I mean कि वो oil और debris को कट डाउन करता है. That's why beta hydroxy acid includes salicylic acid, जो आपके clogged pores को, blackheads को नहीं बनने देता या उसको clean कर देता है. अच्छे से क्लेंस करें. So cleansing से ये भी होगा कि आपकी skin moisturize हो जाएगी and थोड़ी सी calm down हो जाएगी if you have very dry skin. So AHA BHA peeling solution is ideal for those who have oily or combination skin. Even normal skin people can use it, but dry skin people should use it with a little caution. और उसके लिए always start with its application for say like 2 minutes first, and nothing more than that, and wash it off if you have dry and sensitive skin. Oilies and combination skin people actually tolerate it better. So आपने once a week उसको करना है, and क्या कहते हैं, maximum 10 minutes के लिए आपको apply करना होता है. So see, you cleanse her skin and her skin has soaked up all the cleansing cream. I will clear out the excess. Next, just tone to remove excess dirt, debris. I have the ordinary glycolic acid toner, तो मैं ये यूज़ करी. आपके पास अगर घर में homemade toner भी कोई है, कुछ लोग rose water toner बना के रखे हुए होते हैं, so you can use that. Use just any, or you can even use the micellar water, जिससे आप face और makeup clean करते हो. वो एक बार आप अच्छे से clean करके let it seep in, soak in a little bit. ठीक है, ये आप कर लो. So wash your face, cleanse your skin with a cleansing cream, use a toner, and ये थोड़ा dry होने दें. After cleansing toning, अगर toner नहीं है तो आप micellar water भी use कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, take the AHA BHA peeling solution, okay, and then apply it all over your face. You have to apply an even layer, and मैं gloves पहने हैं because when I'm in the clinic, but what you can do is आप gloves ना भी पहने तो just apply it evenly and spread it with your fingers. So I'm going to use some more because it's on the bottom. आपने even layer लगा ली. If you have an applicator brush like face की कोई भी आप मास्क वगैरह लगाते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है उससे ज़रा ज़ाया होता है, तो I always use just my fingers even on myself when I'm doing it at home. So apply an even layer. तो आपको tingling होना शुरू हो जाएगी. burning हो रही है, tingling हो रही है, तो वो होना शुरू हो जाएगी. If you can't tolerate it, then first time के लिए सिर्फ 2 minutes के लिए लगाइए, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना लगाएं. फिर following time आप ये करेंगे कि उसको आप नहीं गया उसको आप जो है 4 minutes के लिए लगाएं. फिर नेक्स्ट टाइम आप जो है 5 minutes लगा लें. सो आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाइए. सो यू विल ऑलवेज बी सेफ देन सॉरी.
ठीक होना वो नाप के इसमें वो करें आफ्टर 10 मिनट्स फेस वॉश हो गया। अगर आप हाथ लगाएंगे तो फेस बहुत स्मूथ एंड फील्स रियली नाइस एंड क्लीन। अक्सर लोग जो है आफ्टर द AHA पीलिंग सोल्यूशन दे फील के स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, so you can moisturize or you can use a sheet mask. Like I will put this hydrating sheet mask on her because I want my stuff to shine on it. कोई शाइन करे ना करे, हम तो शाइन करेंगे। सो आई पुट दिस ऑन, ये 20 मिनट के लिए लगा रहेगा और उसके बाद इसका जो सेरम होगा वो आई विल मॉइस्चराइज इनटू योर स्किन बिकॉज इट कंटेन्स hyaluronic acid, and after that apply I'll apply because it's daytime right now, so I'll apply a sunblock and then she's good to go. She has to take care, her skin might feel dry, so just moisturize. अगर आप लोग रात में ये कर रहे हैं सो इन दैट केस रात को सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाएं, मास्क लगा के क्लीन जब हटाएंगे हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, सो जाए। That's it.